Assalamu alaikum. How are you all, dear students? I hope you all are fine and doing well, and most importantly, staying at home. As you all know that we are doing mole calculations in today's lesson, we will also continue calculations. In the previous topic, you have discussed about mole particle calculations. It was about how you can calculate particle if number of moles are given, and how you calculate number of moles if particles are given. These calculations you have done with these formulas. All of the calculations of mole particle conversions were given with these formulas. Let us discuss the formulas one by one. First of which is given is, you can calculate number of moles by dividing particle number with Avogadro's number. अच्छा, इस फॉर्मूला में अगर आपको मोल नंबर कैलकुलेट करने हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, पार्टिकल नंबर को डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ. पार्टिकल नंबर अब आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे और एवोगैड्रोस नंबर तो कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 6.02 into 10 to raise 23. Okay, and if you have to calculate particle number from mole, how will you calculate it? Yes, you will calculate it by using the second formula. Particle number is equal to mole multiply by Avogadro's number. अगर आप mole number को Avogadro's number से multiply करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, particle numbers. आप इस स्लाइड की लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि इन्हीं दो फार्मूलाज को हम इनके सैम्पल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो n है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n a जो है वो स्पेसिफिकली एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बेटा मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस में आपके पास क्या चीजें जरूरत है, अगर मोल फाइंड आउट करने हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का होना जरूरी है, और अगर पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स का होना जरूरी है. ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करके आप अपनी असेसमेंट 1.10 भी कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन नंबर 15 भी एक्सरसाइज का सॉल्व कर सकते हैं. In the previous topic, we all have discussed about assessment 1.10 and also the question number 15 of the exercise. So we will revise those questions. आप लोगों ने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था कि एस्पिरिन इज अ कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. It is used as a painkiller. An aspirin tablet contains 1.25 into 10 to raise 30 atoms. How many moles of these compounds are present in the tablet? क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन होती है सारी असेसमेंट्स में. तो यहाँ पे क्या जनरल इन्फॉर्मेशन है कि जो डिस्पेरिन वगैरह ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनके अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम है एस्पिरिन. तो एस्पिरिन एक पेन किलर के तौर पे यूज होता है. ये बना हुआ, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, ये बना हुआ कौन से सब्सटेंसेस होता है, वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन. अब आ जाते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे. क्वेश्चन में इन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है कि अगर वो एस्पिरिन की टैबलेट है, उसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो आप करते हैं कैलकुलेट मोल. तो आप सिंपली कैसे मोल कैलकुलेट करेंगे, बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है, आपने गिवन डाटा लिखना होता है, फिर फॉर्मूला लिखना होता है, और फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करके आपने डिवाइड कर देना और आंसर निकाल लेना. गिवन डाटा आपका यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यूज डालें और उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें, तो सिंपली आपने कैलकुलेट कर लिए नंबर ऑफ मोल्स. सो व्हाट यू हैव कंक्लूडेड दैट 1.25 into 10 to raise 30 atoms would contain 0.2 into 10 to raise 7 moles of aspirin painkiller. Okay, now coming to the next question. Calculate number of atoms in 3.4 moles of nitrogen atoms. आपने जो पिछला न्यूमेरिकल किया उसमें क्या चीज कैलकुलेट की, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए. और कैसे कैलकुलेट किए, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन थे. ठीक है, और अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी स्लाइड पे आपको नजर आ रहा है, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है
और आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है। और इसके लिए आपके पास क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ओके, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। तो सिंपली क्वेश्चन में आपके पास नंबर ऑफ मोल्स गिवन है और उनकी क्या वैल्यू है 3.4 एंड एवोगैड्रोस नंबर जो है उनकी क्या वैल्यू है 6.022 इन 10⁻23। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ओके, दिस इज हाउ वी कैलकुलेटेड मोल पार्टिकल कन्वर्जन्स। मोल से पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं एंड पार्टिकल से मोल्स कैसे Is on interconverting अब बेटा आपके masses, पास moles, and numbers इंटरकन्वर्टिंग of मैस मोल और particles. नंबर पार्टिकल्स है। आप इस वीडियो को गौर से 1 देखिए mole तो is equal to 6.02 times बेटा ये जो वीडियो है अगर आप इसको गौर से देख लेंगे तो आपने पीछे जितनी असेसमेंट जितने क्वेश्चंस किए हैं वो सारी असेसमेंट्स और सारे क्वेश्चंस जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। ओके, converting masses, moles, and numbers of particles. 1 mole is equal to 6.02 times 10 to the 23rd. And this number is referred to as Avogadro's number. An Avogadro's number was determined by measuring the number of carbon atoms in exactly 12 grams of the isotope carbon-12. And so Avogadro's number is a rather large number. And the concept of Avogadro's number and the mole are often concepts that are only talked about in chemistry. But the thing is, the concept of a mole is similar to the concept of, say, a dozen. So for example, if you have 1 dozen pencils, you have 12 pencils. Or if you have 1 dozen cookies, you have 12 cookies. A dozen could also be applied to some more typical chemistry terms. If you have a dozen atoms, you have 12 atoms. Or if you have a dozen molecules, you have 12 molecules. And the application of a mole is the same. So you could have a mole of pencils, and if you had a mole of pencils, you would have 6.022 times 10 to the 23rd pencils. If you had a mole of cookies, you would have 6.022 times 10 to the 23rd cookies. But more commonly, we talk about moles in relation to atoms or molecules. Now, we don't often talk about having a mole of pencils or a mole of cookies because that's such an extreme amount of everyday objects. We talk about moles more in relation to atoms or molecules. By definition, 1 atom of carbon-12 is equal to exactly 12 AMU, or atomic mass units. And so 1 mole of carbon-12 is equal to exactly 12 grams. And so the weight of 1 atom or molecule in atomic mass units is equal to 1 mole of that same atom or molecule in grams. And so this is an extension of the concept of formula weight. And we call the weight of 1 mole of an element or molecule its molar mass. So using this information, we can now convert between grams and moles. And we do that using the molar mass. We also know that we can convert between moles and atoms or molecules using Avogadro's number. What this slide also illustrates is that although you can go indirectly from grams to atoms or molecules, you cannot directly go from grams to atoms or molecules. You need to go through moles to convert between grams and molecules. Let's try an example. How many atoms of cadmium are in 2.5 moles of cadmium? So we'll start with 2.5 moles of cadmium. We know that if we want to go from moles to atoms or molecules, we need to use Avogadro's number. So 1 mole of cadmium is equal to 6.022 times 10 to the 23rd atoms of cadmium. And we put moles of cadmium on the bottom so that moles will cancel out. This tells us that in 2.5 moles of cadmium, there are 1.51 times 10 to the 24th atoms of cadmium. Let's try a slightly more complicated example. 68.3 grams of potassium hydroxide are equal to how many molecules of potassium hydroxide?
So we start with 68.3 grams of potassium hydroxide. And we know that we can't go directly from grams to molecules. So our first step needs to be to convert from grams of potassium hydroxide to moles of potassium hydroxide. And we do that using the molar mass. So 1 mole of potassium hydroxide is equal to 56.1 grams of potassium hydroxide. So remember, the numerical value of the molar mass in grams is equal to the numerical value of the formula weight in AMU. So if you know how to calculate formula weights for compounds, you know how to calculate the molar masses of compounds. By putting grams of potassium hydroxide on the bottom, this allows us to cancel out grams of potassium hydroxide. Now we can convert from moles to molecules using Avogadro's number. So 1 mole of potassium hydroxide is equal to 6.022 times 10 to the 23rd molecules of potassium hydroxide. Again, we placed moles of potassium hydroxide on the bottom, so it will cancel with moles of potassium hydroxide on the top. Now, remember when writing out these conversions, not to confuse moles with molecules. Sometimes people start abbreviating molecules, MOL, and that's going to make it harder to keep your units straight in your dimensional analysis problems. We can then cancel out moles of potassium hydroxide and we're left with molecules of potassium hydroxide. So our calculation tells us that 68.3 grams of KOH is equal to 7.33 times 10 to the 23rd molecules of KOH. Okay, dear students, this was the review of mole particle, mole to molar mass calculations. आप लोगों ने previously 4 types की calculations की हैं. Mass to mole find out किए हैं, mole to mass find out किए हैं, mole to particles find out किए हैं, and particle to mole find out किए हैं. इस वीडियो में आपको ऑलमोस्ट सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो कवर हो गई हैं, रिवाइज हो गई हैं, जो आपने प्रीवियस 2 लेसन्स में रिकॉर्ड की हैं. ओके, so today we are going to discuss a new type of particle mass calculation. ठीक है, अब हमने पार्टिकल और मास को कैसे कैलकुलेट करना है. जैसे मोल से हमने पार्टिकल कैलकुलेट किए थे या पार्टिकल से मोल कैलकुलेट किए थे, अब हमारा क्वेश्चन ये रेज होता है कि हमने मास कैसे फाइंड आउट करना है. ठीक है, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पार्टिकल मास कैलकुलेशंस. फॉर्मूले इन कैलकुलेशंस में हमारे पास ये फॉर्मूला, and the formula is number of particle is equal to mole into Avogadro's number. ये अभी फॉर्मूला आपने पीछे की कैलकुलेशंस में यूज किया है. हमने सिंपली क्या करना है, इसी फॉर्मूला से एक न्यू फॉर्मूला डिराइव करना है. कैसे? नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मोल into Avogadro's number. As you know that mole is equal to mass over molar mass. As you know that मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास. सो हमने क्या किया, मोल की जगह पे मोल का फॉर्मूला पुट कर दिया और मास ओवर मोलर मास लिख दिया. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या की, रीअरेंजिंग की. जो हमारे पास मास था उसको हम एक साइड पे ले आए, क्योंकि हमने मास कैलकुलेट करना है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो बाकी सारी जो वैल्यूज हैं उनको हम एक साइड पे लेकर, नंबर ऑफ मोलर मास यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, और एवोगैड्रोस नंबर क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो गया. ठीक है, और इस तरीके से हमने एक न्यू फॉर्मूला डिराइव कर लिया, और ये न्यू फॉर्मूला जो है हमारी फर्दर कैलकुलेशंस में हेल्पफुल होगा. सो हम अपने इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, और ये कहाँ पे अप्लाई होगा, आपकी एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 15 है, कैलकुलेट मास ऑफ द फॉलोइंग. इसमें ये क्वेश्चन जो है हम ये फॉर्मूला जो है हम अप्लाई करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ विच इज कैलकुलेट द मास ऑफ 3.24 into 10 to raise 10 atoms of iron. आपने क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है, ये चीज सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखनी होती है. ठीक है, तो आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि आपने इस क्वेश्चन में मास ऑफ आयरन फाइंड आउट करना है, और गिवन आपको क्या है, 3.24 into 10 to raise 18 एटम्स मींस पार्टिकल्स ऑफ आयरन गिवन है. आपको पार्टिकल्स गिवन है और आपने मास फाइंड आउट करना है. लेकिन इसके लिए आपको
सबसे पहले क्या चीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मोलर मास ऑफ आयरन. As you know that atomic mass of an element is its molar mass. कि आपके पास आयरन है तो जो उसका एटॉमिक मास होगा वही उसका मोलर मास होगा. ओके तो आयरन का जो है एटॉमिक मास कितना होता है 56 और यही इसका मोलर मास है. अब जो आपने फॉर्मूला डिराइव किया था कि मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, वो फॉर्मूला यूज करके ये वैल्यूज पुट करेंगे और आप फर्दर कैलकुलेशंस कर लेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट कैलकुलेट मास ऑफ 2 into 10 to raise 10 molecules of nitrogen gas. अगेन आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और आपने क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है. इसके लिए भी सेम फॉर्मूला यूज होगा जो हमने अभी डिराइव किया था और वो फॉर्मूला क्या था, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर. बट इस फॉर्मूला में एक प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो गिवन है, एवोगाड्रोस नंबर आपको पता है वो कांस्टेंट वैल्यू है. कौन सी वैल्यू होती है 6.02 into 10 to raise 23. लेकिन एक बात आपकी आ जाती है कि मोलर मास आपने कैलकुलेट करना होता है. अब नाइट्रोजन गैस है तो बेटा ये किस फॉर्म में नाइट्रोजन एग्जिस्ट करती है, नाइट्रोजन गैस N2 की फॉर्म में, मींस देयर आर 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन. एक नाइट्रोजन का एटम होगा तो उसका मास होता है 14. 2 नाइट्रोजन के एटम्स होंगे तो उनका मास क्या हो जाएगा 28. अब आपने फॉर्मूला लेना है और इस फॉर्मूला के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है. नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने गिवन है 2 into 10 to raise 10 एंड मोलर मास क्या है 28 ग्राम्स और एवोगाड्रोस नंबर क्या है 6.02 into 10 to raise 23. सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे तो फाइनली आपके पास मास आ जाएगा एंड दैट इज 9.3 into 10 to raise -3 grams. Okay, I am holding the slide for a while so all you can note the question. Coming to the next question, calculate mass of 1 into 10 to raise 25 molecules of water. अगेन बेटा क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है एंड नंबर ऑफ मास जो है आपने फाइंड आउट करना है. ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है और फाइंड आउट क्या करना है, आपने मास फाइंड आउट करना है. तो पहले आप वैल्यूज लिखेंगे. मास फाइंड आउट करने का आपके पास क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर. ओके क्या फॉर्मूला है आपके पास, mass is equal to number of particles multiplied by molar mass and divided by Avogadro's number. Okay, आपने वैल्यू पुट की, नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पे कौन सी वैल्यू लिखेंगे 1 into 10 to raise 25 एंड मोलर मास क्या है आपके पास 18 ग्राम एंड एवोगाड्रोस नंबर क्या है 6.02 into 10 to raise 23. तो फाइनली जो है आपके पास आफ्टर कैलकुलेशन मास आ जाएगा एंड दैट इज 3 into 10 to raise 2 grams. Okay, I'm holding the slide for a while so all you can note it down. Okay, I think you all have noted it down. Now the fourth question is calculate mass of 3 into 10 to raise 6 atoms of aluminum. आपने एल्यूमिनियम के एटम्स जो हैं उनका मास फाइंड आउट करना है. कितने एटम्स का मास फाइंड आउट करना है 3 into 10 to raise 6 पार्टिकल्स का. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम लिखेंगे आप 3 into 10 to raise 6 एंड मोलर मास आपके पास कहाँ से आएगा, मोलर मास इज ऑफ एन एलिमेंट इज एक्चुअली इट्स एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, आप पीरियोडिक टेबल से देखेंगे. ठीक है, ये आपके कोर्स का हिस्सा है कि आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मासेस को याद करना है. एल्यूमिनियम इज आल्सो वन ऑफ देम. मोलर मास आपके पास आ गया एल्यूमिनियम का, दैट इज 27 ग्राम पर मोल. अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, मास फाइंड आउट करेंगे और मास का वही फॉर्मूला लगाएंगे जो अभी आपने प्रीवियस टॉपिक्स में यूज किया है एंड दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर. ओके,
तो क्या आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 3 इंटू 10 टू रेज 6, मोलर मास क्या है 27, एंड एवोगाड्रोस नंबर क्या है 6.02 इंटू 10 टू रेज 23। ये सारी चीजें पुट करने के बाद आपके पास फाइनली मास आ जाएगा, एंड मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 1.34 into 10 to the 16 gram. This is how we calculate mass from number of atoms or number of particles. Okay, I am pausing the slide so you all can write it down. Okay, dear students, this was all about today's lesson. आप लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? आप लोगों ने प्रीवियस लेसन्स में जो कैलकुलेशंस की थी उनको थोड़ा सा रिवाइज किया, और वो कैलकुलेशंस कौन सी थी? मोल टू मास एंड मास टू मोल कैलकुलेशंस, मोल टू पार्टिकल एंड पार्टिकल टू मोल कैलकुलेशंस। ठीक है, आपने इनकी थोड़ा सा हिंट लिए, थोड़ा सा इनको रिवाइज किया। इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा कि आप नंबर ऑफ एटम से, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से या नंबर ऑफ पार्टिकल से आप मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने उसका फॉर्मूला डिराइव किया, और सिंपली फिर क्वेश्चन नंबर 15 पे वो फॉर्मूला अप्लाई करके हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, अब हम क्या करेंगे, आप लोग इस वीडियो को जल्दी से देख लें, केयरफुली आप लोगों ने इसको देखना है, तो उसके बाद आपकी कोई क्यूरीज होंगी तो वो सारी जो है सॉल्व हो जाएंगी। ओके, When you go to the grocery store to buy eggs, you typically don't buy individual eggs. Most often, they happen to be grouped into a dozen. In everyday English, the word dozen simply represents the number 12 as a quantity. Thus, it has no unit, and it can be used to quantify any object you want, such as the number of eggs. But when you're dealing with atoms and molecules, you are dealing with objects so tiny that it makes no sense to count individual particles or even dozens of particles. Instead, just as grocery shoppers use the word dozen, chemists use the word mole, which represents the number of carbon-12 atoms in 12 grams of carbon. This number is around 6.02 times 10 to the 23rd power. This number is also known as Avogadro's number, which we give the symbol capital N sub A. So the number of carbon-12 atoms in 12 grams of carbon is Avogadro's number. The number of moles is given the symbol lowercase n and represents the amount of any substance, not just carbon-12 atoms. We can therefore derive some simple calculations. Since there are 6.02 times 10 to the 23 particles per mole, the total number of particles should equal the number of moles multiplied by 6.02 times 10 to the 23rd. Using symbols, we write this as capital N, which is the total number of particles, equals lowercase n multiplied by capital N sub A. Let's do a few standard high school questions to get the hang of this concept. How many particles are in 4 moles? If 1 mole of particles is equal to 6.02 times 10 to the 23 particles, then 4 moles should be 4 times 6.02 times 10 to the 23, which gets us a product of 2.41 times 10 to the 24 particles in 4 moles. How many moles of a particle are in a certain number of particles? For example, suppose we have a small container of water and we are told that it consists of 3.01 times 10 to the 25th power water molecules. Using basic algebra, we can calculate the amount of molecules to be equal to the number of particles divided by Avogadro's number. This gets us 3.01 times 10 to the 25th power water molecules divided by 6.02 times 10 to the 23rd power molecules per mole, which is 50 moles. This question is just like asking, if you are given 48 eggs, how many dozen eggs are there altogether? So far, we've calculated the number of discrete particles. But what if we're interested in smaller units like individual atoms or ions? For example, how many carbon and oxygen atoms are there in a tenth of a mole of carbon dioxide? First, how many carbon dioxide molecules are there in a tenth of a mole? It must be a tenth of Avogadro's number. So there are 6.02 times 10 to the 22nd power carbon dioxide molecules in a tenth of a mole.
So how many carbon and oxygen atoms are there in this amount of carbon dioxide molecules? For each molecule of CO2, there are 1 carbon atom and 2 oxygen atoms. So 1 mole of CO2 molecules gives 1 mole of carbon atoms and 2 moles of oxygen atoms. Given the atom to molecule ratio, there should be just as many carbon atoms as there are carbon dioxide molecules. The number of carbon atoms is 6.02 times 10 to the 22. And there are twice as many oxygen atoms as there are carbon dioxide molecules. The number of oxygen atoms is 1.2 times 10 to the 23. Dear students, I think आप लोगों को अब ज़्यादातर बातें क्लियर हो चुकी होंगी इन कैलकुलेशंस की. इसके बाद हम एक लेसन देंगे कल का, जिसमें इन सारी कैलकुलेशंस को हम रिवाइज कर लेंगे, जिसमें आपकी सारी क्यूरीज को सॉल्व कर लिया जाएगा. यू कैन आस्क दैट एनी टाइम. ओके बच्चे, इसके बाद आप लोगों ने अब होमवर्क क्या है कि आपकी तकरीबन सारी असेसमेंट्स हो गई हैं, तो आप लोगों ने कंप्लीट करनी है अपनी नोटबुक पे 1.1 से लेके 1.10 तक सारी असेसमेंट्स. किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको मैं गाइड कर दूंगी, और आप लोगों ने ये असेसमेंट सॉल्व करनी है. फिर एक दिन डिसाइड करते हैं जिसमें मैंने ये असेसमेंट सारी आपकी चेक करनी. ओके, थैंक यू सो मच. आई होप आपने एंजॉय की होंगी मैथ प्लस केमिस्ट्री. सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज.